होजाई जिले के लंका गुरुद्वारा प्रांगण में सदौ असमिया सिख संस्था असम सारे असमिया सिख संगठन की साधारण सभा आयोजित की गई। इस सभा में चाप्रमुख, बरकला, हाथीपारा, होजाई, कार्बी आंगलोग, गुवाहाटी और लमडिंग से आए कई सौ असमिया सिखों ने भाग लिया। सभा के दौरान असमिया सिख संस्था की पुरानी समिति ने पद त्याग कर दिया। इसके बाद उपस्थित समुदाय के समर्थन से पैनल के माध्यम से सदौ असमिया सिख संस्था असम की एक नई और शक्तिशाली समिति का पुनर्गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में राजवीर सिंह को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जबकि गोविंद सिंह को महासचिव साधारण संपादक नियुक्त किया गया। करमजीत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और राम सिंह, लाल सिंह और श्याम सिंह को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। অসমীয়া শিক্ষা সন্থা চলি আহিছিল। 2019 বৰ্ষত 2019 চনত পুনৰ কিছু পৰিস্থিতিৰ সাপেক্ষে আমাৰ সমূহ ৰাইজৰ সন্মতিৰে এখনি অসমীয়া শিক্ষাৰ পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন হৈছিল। উন্নয়নৰ পথত কেনেদৰে চলাই নিব লাগে তাৰ গুৰিয়াল হিচাপে মোক আপোনালোকে ধৰিব। আৰু এইখন গাড়ী কোনো কাৰণত মই বিঘ্নিত হ'বলৈ নিদিওঁ। কেতিয়াও যদি আমি গাড়ী চালকৰ ভাষাৰে কওঁ, কেতিয়াও গাড়ী পামচাৰ হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু সুন্দৰ ভাৱে এখন গাড়ী লৈ যাম। আৰু তাৰ বাবে মই পুনৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত একতাৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিব আৰু বাকীখিনি গুৰুজীৰ কৃপাত সকলোবোৰ লাহে লাহে আমাৰ ভাল কামবোৰ হৈ যাব। আৰু এইখিনিতে সংবিধান সংশোধনৰ এটা প্ৰস্তাৱ ধৰি যিসকল চুৰি গৈছে বিশেষকৈ